Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year students and welcome to the physics classroom. I am Irtaza Iqbal, your physics instructor. I hope you all are fine and enjoying good health by the grace of Allah Almighty. Students, in our previous lesson, we have learned about our paper pattern and the marking scheme. Now today we have to start our first chapter of second year, that is electrostatics. So let's start with the introduction. The word statics means rest and electro refers to the electric charge. So in electrostatics, we deal with the study of charges at rest under the influence of electric forces. As electrostatics is a branch of physics which deals with the study of charges at rest under the influence of electric forces. So in this chapter we will discuss different phenomena in which their two fundamental processes are Coulomb's law for force between stationary charges and the principle of superposition for electric field. Also, in this chapter, we have to study about the concept of work done by electric field on a charged particle, and another important quantity is being discussed in the chapter, that is capacitance and its dependence on the dielectric. As capacitance refers to the property of a capacitor to store a charge and its dependence on a dielectric material. Basically dielectrics are the materials that are electrically neutral. So हम लोग इन तमाम फिनोमिनाज इन तमाम पॉइंट्स के बारे में अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. बट टुडे we have to discuss about very basic concepts and the key concepts of electrostatics. So our learning objectives are to understand the concepts of electrostatics, what is electric force, basic electrostatics law, properties of charge, test charge and point charge, and in last we will discuss an overview of Coulomb's law. I think कि आप लोग सब लोग Coulomb's law से familiar हैं पहले भी, but we have a short overview of Coulomb's law in our today's lesson. So start with the very first and the very basic points, that is electric force. As we all know that same charges repels each other and opposite charges attract each other. So the repulsive or attractive interaction between two charged bodies is called electric force or electrical force. Means कि वो force तो जो चार्ज्ड बॉडी के दरमियान में एक्सर्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स. और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और वो फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी कहते हैं. यही कॉन्सेप्ट्स हम लोग लेके जाएंगे फर्दर लॉ की तरफ, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ. बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ states that like charges repel and unlike charges attracts each other, as you shown in figure, that the opposite charges attract each other and the same charges may be positive or negative repel each other. So this is the electric force and it leads to the basic electrostatics law. So in our next slide we have to discuss about the basic properties of charge. जैसे कि हम लोगों को पता है कि चार्जेस जो हैं वो टू टाइप्स के हैं, either charge may be positive or negative. So there are very basic properties of electric charges that are as follows. Number one is charges are additive in nature. Second one is charges are conserved quantity, and third one is quantization of charge.
चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर मीन्स कि हम लोग चार्जेस को किस तरह से ऐड करेंगे, चार्जेस को हम लोग ऐड अप कर सकते हैं. चार्ज इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी मीन्स चार्ज is a neutral. Overall charge of an atom is neutral, and this property deals with law of conservation of charge and quantization of charge. In quantization of charge, we've studied about the discrete charge nature. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे एडिटिव नेचर से, किस तरह से हम लोग चार्जेस को एड अप कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन दिस फिगर वी हैव अ सरफेस दैट हैज अ टोटल चार्ज कैपिटल Q, but we have the charges here are Q1, Q2 and Q3. क्योंकि चार्जेस की भी प्रॉपर्टीज है कि हम लोग उन्हें सम अप कर सकते हैं. सो व्हेन वी एड अप दीज चार्जेस Q1 plus Q2 Q3, the total charge become Q, that is capital Q, and it's proved the additive nature of charge. So move towards the second property, that is conservation of charge. In conservation of charge, we deals with law of conservation of charge means charge can neither be created nor destroyed, but it can be transferred from one surface to an other surface by different methods like conduction or induction. But overall charge become neutral. Net charge is equal to 0. मीन्स कि हम लोग चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट चार्ज जो है वो एक सरफेस से सेकेंड सरफेस पे ट्रांसफर हो सकता है. जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास है कि अगर एक एटम जो है वो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वो लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज. सो द ओवरऑल चार्ज ऑफ एन एटम become neutral and it obeys conservation of charge. And the third quantity is quantization of charge. Quantization of charge means charge is a quantized quantity means it is a discrete in nature, not continuous, but it has a discrete value. Suppose charge on a body is Q, then it can be written as Q is equal to Ne, where N is an integer, positive or negative integer like positive 1, 2, 3 or negative -1, -2, -3, etc. So quantization means we have discrete value of charge, not continuous charge value. And the SI unit of charge is coulombs, and it is denoted by symbol C. And the charge carried by an elementary particles कौन से हैं? Electrons or protons, means fundamental particles, is written as E, means represented as E, जिसका magnitude जो है वो quantized है, means एक discrete value, means charge on an electron or proton has a discrete value, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. For electron, it has a negative charge but same magnitude, and if we talk about proton, it has positive charge but the magnitude of the charge remains same, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन अ बॉडी एंड आल्सो टू कैलकुलेट अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इन अ बॉडी. किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग चार्जेस को जो कि एक बॉडी में प्रेजेंट है, या कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस सपोज कि हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N1 है and N2 are the number of protons. So the total amount of charge, because we know the charge is quantized, it has some discrete value, some final value.
So the total amount of charge will become N2e minus N1e, means that N2e is for proton and negative sign represents electrons. So N1e are the number of electrons. Positive negative become negative, so we written as N2e minus N1e. These are the properties of charge that are additive nature, conservation of charge and quantization of charge. I hope कि आप लोगों को इन तीनों प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी. सो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं टेस्ट चार्ज एंड पॉइंट चार्ज. ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं और सिंपल टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को फर्दर मूव करने से पहले इनके बारे में एक ओवरव्यू का पता होना चाहिए. सो व्हाट इज टेस्ट चार्ज एंड व्हाट इज पॉइंट चार्ज? टेस्ट चार्ज इट इज़ अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज. आपको याद रखना है कि टेस्ट चार्ज स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबली वीक है, बट इट इज ए चार्ज्ड, it has some charge which electric field may be zero, not maybe negligibly weak, but charge, it has some charge, non-zero charge. So what is point charge? Point charges को हम लोग localized charges भी कहते हैं और ये वो चार्जेस हैं जिनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस हैं जिनका साइज बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो टेस्ट चार्ज इज अ पॉजिटिव चार्ज whose electric field is weak, and point charges or localized charges are charges whose size is very small as compared to the distance between them. Means कि जितना उनके दरमियान में डिस्टेंस है उससे भी कम उनके साइजेस हैं पॉइंट चार्जेस. So in last we have to learn about Coulomb's law, a small overview of Coulomb's law. And Coulomb's law deals with the point charges. Now what is point charge? Point charges are localized charges, are such charges who has very small size as compared to the distance between. So what is Coulomb's law? According to Charles Lee Augustin de Coulomb, between 2 point charges there is a force of attraction or repulsion depending upon the nature of charges. Means let us consider कि हमारे पास 2 point charges हैं. Nature of charge means maybe these charges are positive, same in nature or same charges, and maybe these charges are opposite in nature, means opposite charges. So as we all know that same charges repel each other, so these 2 point charges feels electrostatic force of repulsion. And as we also know that opposite charges attracts each other, so the opposite point charges feels electrostatic force of attraction. अब इस फोर्स जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन भी हो सकती है, जो कि ये 2 पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगे. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है वो हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे. एंड मैथमेटिकल फॉर्म इज F is equal to K Q1 Q2 over R square. Means Coulomb's electrostatic force is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the distance between the square of the distance between two objects. जैसे कि ये इंडिकेट है F12 वो फोर्स है जो कि चार्ज 1 एक्सर्ट करेगा चार्ज 2 पे, F21 वो फोर्स है जो कि सेकेंड चार्ज एक्सर्ट करेगा फर्स्ट चार्ज पे. K is an electrostatic constant and Q1 and Q2 is a product of charges. R square is the distance between two objects, square of the distance between two objects. स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है. नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे
Coulomb's law in detail. So I hope you all understand the lecture. Thank you. Have a nice day.